Je n'ai pas été long, amen. लामो बोलिन मलाई लाग्छ Voici la fin du message. यही हो अन्तिमको वचन Car tu as été choisi किनभने तपाईँ चुनिनु भएको छ afin que tu ordonnes कि तैँले à tes fils आफ्नो छोराछोरीलाई et à ta maison घरलाई après toi सिकाउनु de garder la voie de l'Éternel परमेश्वरको वचन en mettant en pratique la droiture et la justice. यसलाई धार्मिकतालाई पछ्याउनु Et qu'ainsi अनि के l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. र अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले पूरा गर्नुभयो Abraham avait reçu la promesse. अब्राहमले प्रतिज्ञा पाए Abraham avait été appelé. अब्राहमलाई बोलायो Abraham avait été choisi. अब्राहमलाई चुनियो Mais maintenant, तर अब il fallait qu'il marche. उल हिँड्नु पर्यो Il fallait qu'il bâtisse des उसले étables. बनाउनु पर्यो Il fallait वेदीहरू qu'il creuse des puits. उसले किनाराहरू खन्नु पर्यो Alléluia. Il हालेलुया fallait qu'il obéisse. à la उसले voix de पालन Dieu. गर्नु पर्यो Il परमेश्वरको fallait वचन qu'il écoute la voix de उसले Dieu. परमेश्वरको वचन सुन्नु पर्यो Amen. आमेन Et c'est ce à quoi nous sommes tous appelés. यसमा चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको Nous avons हामीलाई। tous des maisons. हामी सबैजनाको घर छ Nous avons tous des enfants. सबैजनाको बच्चा छ Mais quelqu'un va me dire, कसैले भन्नुहुन्छ mais je n'ai pas d'enfant. मेरो बच्चा छैन Laisse-moi te dire, मलाई भन्न दिनुहोस् Dieu a pensé à cela. परमेश्वरले यसको बारेमा Il a dit vous सोच्नुभएको tous. छ। उहाँ भन्नुभएको छ Que quelqu'un dise vous tous. कसैले भन्नुहोस् हे सबै Alléluia. हे सबै Et Sabaï. Vous tous. हे सबै Et Sabaï. Qui avez quitté vos pères, votre mère pour me suivre. जसले आफ्नो आमा र बाउलाई त्यागेर मलाई पछ्याउँछौ Vous allez recevoir au centre. तिमीहरूले बढी रूपमा पाउनेछौ Vous allez recevoir des pères. बाउ पाउनेछौ Vous allez recevoir des mères. आमा पाउनेछौ Vous allez recevoir des enfants. बच्चाहरू पाउनेछौ Et votre objectif, अनि तिमीहरूको लक्ष्य Dieu va vous mettre des chrétiens परमेश्वरले क्रिस्चियन entre vos mains. तपाईहरूको हातमा दिनुहुन्छ तपाईँको लक्ष्य C'est de leur partager cette parole, तिनीहरूसँग वचन बाँड्ने हो de leur enseigner cette parole, सिकाउने यो वचन pour qu'ils deviennent vos enfants. कि उनीहरू प्रभु येशूमा तपाईँहरूको बच्चा बनिन Amen. सकुन् आमेन L'apôtre Paul, c'est ce qu'il a fait. पावलले त्यसै गरे Amen. आमेन Il a dit, उसले भने je vous ai marié à un seul. मैले तिमीहरूलाई एउटै बेहुलासँग बिहे गरेको Il a dit, vous êtes ma couronne. उहाँले भन्छ तिमीहरू मेरो मुकुट हौ Amen. आमेन Donc quand nous venons à l'église, जब हामी मण्डली आउँछौँ ce n'est pas seulement pour une religion. एउटा धर्मको लागि हामी आएको होइन धर्म Écoutez होइन cette parole, तर यो वचन सुन्न la mettre dans le आफ्नो हृदयमा राख्न cœur, saisir de र cette यसलाई पक्रिन parole, la mettre en pratique pour nos यसलाई दिन vies प्रतिदिन आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न et la partager र अरूसँग बाँड्न avec tous ceux à qui le Seigneur va mettre जे sur notre पनि chemin. छ परमेश्वरले हामीलाई लगाइदिनु भयो त्यो बाँड्नलाई Ça doit commencer dans notre maison. हाम्रो घरबाट यो सुरु हुनुपर्छ Ça doit commencer dans nos familles. हाम्रो घर परिवारमा Amen. आमेन Lire la parole de Dieu परमेश्वरको वचन पढ्नु couramment. C'est de demeurer dans sa présence. हरेक दिन उहाँको उपस्थितिमा बस्नु Alléluia. हालेलुया C'est ça l'objectif. यही हो हाम्रो लक्ष्य Ce n'est pas seulement venir le यो dimanche. चाहिँ आइतबार मात्रै सेवा आउनु होइन Parce que tous les jours किनभने हरेक दिन appartiennent à l'éternel. प्रत्येक दिन परमेश्वरको हो Alléluia. हालेलुया Et tous les jours, तर प्रत्येक nous दिन devons marcher selon ça. हामी हिँड्नुपर्छ उहाँको वचन अनुसार पनि Néanmoins, तैपनि il a donné des apôtres, उहाँले प्रेरितहरू des दिनुभयो pasteurs, des पास्टरहरू évangélistes, सुसमाचार सुनाउनेहरू l'édification तपाईलाई de ce corps बढाउनका लागि त्यो afin शरीरमा qu'il soit apte कि à mettre en pratique ces choses. त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पालन गरोस् दिन प्रतिदिन भनेर Quand on bâtit une maison, जब हामी एउटा घर बनाउँछौँ il faut un architecte. एउटा घर बनाउन जान्ने C'est मान्छे Jésus हुनुपर्छ qui est l'architecte. त्यो आर्किटेक्ट चाहिन्छ त्यो Il चाहिँ faut un येशू हो। maçon. एउटा काम गर्ने Et मान्छे lui, il choisit le maçon. अनि उसले चाहिँ दाउराहरू कुन Ce चाहिँ n'est प्रयोग pas गर्ने Abraham qui a choisi Jésus, अब्राहमले येशूलाई चुनेको होइन mais c'est Dieu qui l'a तर choisi. परमेश्वरले अब्राहमलाई चुनेको Alléluia. हालेलुया Mais laisse-moi te dire, तर मलाई भन्न दिनुहोस् pour que tu découvres तपाईले जान्नका l'appel लागि de Dieu dans ta vie, परमेश्वरको बोलावट तपाईको जीवनमा il faut que tu saches d'abord qui t'appelle. तपाईले जान्नुपर्छ परमेश्वरको Et là, il va te dire, र उहाँले तपाईलाई भन्नुहुन्छ je ne t'appelle plus, tu n'es plus Simon, म तँ सिमो होइन maintenant tu es Pierre. तर अब तिमी Et पत्रो sur छौ। cette pierre, यो पत्रो je यो bâtirai चट्टान mon église. माथि म मण्डली बनाउँछु Car la vie अनि éternelle, अनन्त जीवन c'est de connaître चाहिँ जान्नु हो qui est Jésus. प्रभु येशू ख्रीष्टको हुनु C'est ça notre objectif. यही हो हाम्रो लक्ष्य C'est de le connaître यो जान्नु et de partager cette connaissance बान्नु यो अरूसँग à nos enfants, हाम्रो à बच्चासँग nos familles हाम्रो घर परिवार et à tous ceux que l'éternel जतिजना va mettre sur nous. परमेश्वरले तपाईको हातमा दिनुहुन्छ तिनीहरूसँग बाँड्नु Amen. आमेन Si tu n'arrives pas à pratiquer cela, यदि यो बाँड्न सक्नुहुन्न tu n'as pas encore
तपाईँकोमा विश्वास छैन Alléluia. हालेलुया Donc dis à ton voisin, छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् mets en pratique यसलाई पालन गर्नु la parole de Dieu. परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नु भन्नुहोस् छेउको मान्छेलाई बाँड्नु La parole de Dieu. परमेश्वरको वचनहरूसँग C'est tout ce que l'Éternel a parlé. परमेश्वरले यति नै भन्नुहुन्छ Alléluia. आमेन Jean 15 pour finir, यो सक्नको लागि एउन 15 लाई पढ्ने छौं au verset 4. 15 को 4 Demeurez en moi ममा बास गर et je demeurerai en vous. ममा रहो र म तिमीहरुमा रहने छु Comme le sarment ne peut de lui-même जसरी porter du हाँगा fruit दागको बोटबाट s'il ne demeure attaché au cep. बाहिर रह्यो भने आफैलाई फल फल्दैन Ainsi vous ne le pouvez non plus. त्यसरी तिमीहरु ममा रहेनौ भने तिमीहरुले पनि सक्दैनौ Si vous demeurez en moi, यदि तिमीहरु ममा बास गर्छौ भने que quelqu'un dise si je demeure en lui. यदि कसैले भन्नुस् यदि म उहाँमा रहे भने Je suis le cep au verset 5 et vous êtes le sarment. En d'autres termes, je suis le tronc et vous êtes des branches. भन्नुहुन्छ दागको बोट म नै हुँ तिमीहरु चाहिँ हाँगाहरु हौ Celui qui demeure en moi जो ममा बास गर्छ et en qui je demeure यदि ममा कोही रह्यो भने र म त्यसमा porte beaucoup de fruits. त्यसले धेरै फल फलाउँछ Car sans moi, किनभने म बाहेक vous ne pouvez rien faire. मबाट अलग गएर तिमीहरु केही गर्न सक्दैन Si quelqu'un ne demeure pas en moi, यदि कोही ममा बास गर्दैन il est jeté dehors, त्यसलाई बाहिर फ्यालिने छ comme le sarment. जसरी त्यो रुखको बोट Lorsqu'on coupe une branche d'un जब arbre, एउटा रुखको हाँगा काटिन्छ elle ne peut plus produire de त्यो fruits. हाँगाले कुनै फल फलाउन सक्दैन Puis on ramasse cette branche, अनि त्यो हाँगालाई लिन्छ on la jette au feu आगोमा बालिन्छ et il brûle. अनि त्यो बल्छ Laissez-moi vous dire ceci. मलाई भन्न दिनुहोस् यो Beaucoup d'appelés, धेरैजना बोलाएको छ peu d'élus. तर चुनिएका थोरै Et छ laisse-moi te dire, मलाई भन्न दिनुहोस् tu as la clé तपाईकोमा चाबी छ de ton élection. आफू चुनावमा उठे कि नउठे Si et seulement si यदि र यदि tu marches selon ses principes, यो पालन गर्नुहुन्छ वचन reçois la parole de Dieu, परमेश्वरको वचन पाउनुहुन्छ crains l'éternel. र परमेश्वरको भय Parce que la मान्नुहुन्छ crainte de किनभने l'éternel परमेश्वरको भय est मान्नु le नै commencement de la ज्ञानको sagesse. सुरुवात हो Si tu ne crains pas यदि Dieu, परमेश्वरदेखि tu ne डराउनुहुन्न pourras pas mettre sa parole. तपाईले आफ्नो वचन हृदयमा राख्नै Si tu ne सक्नुहुन्छ le crains pas, यदि परमेश्वरको भय मान्नुहुन्न la crainte c'est le respect. भय मान्नु भनेको नि आदर गर्नु C'est une हो révérence. यो चाहिँ मान्नु हो Alléluia. हालेलुया C'est ce que Dieu dit परमेश्वर यो भन्नुहुन्छ que je fais. म यसो गर्छु Parce qu'il l'a dit. परमेश्वरले भन्नुभएको छ Et प्रतिज्ञा parce que je l'aime. म उहाँलाई माया गर्छु Amen. आमेन Alors si tu l'aimes, यसै कारण यदि तपाईँ परमेश्वरलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँको भय मान्नु tu vas aimer sa parole. उहाँको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस् Tu vas la mettre en pratique. यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस् Parce que tu as peur किनभने तपाईँ डराउनुहुन्छ de le décevoir. परमेश्वरलाई दुखित Tu as बनाउनु peur तपाईँ डराउनुहुन्छ de détruire ce cadeau. यो उपहारलाई Amen. नष्ट पार्नु Lorsqu'on t'offre un cadeau, जब तपाईँलाई कसैले उपहार दिन्छन् tu veux prendre ça तपाईँ त्यसको हेरचाह गर्न चाहनुहुन्छ parce qu'il est précieux. किनभने त्यो तपाईँको लागि बहुमूल्य छ Alléluia. हालेलुया Pour vous qui avez déjà été baptisés dans le जतिजना nom de बक्सिस Jésus, गर्नुभएको छ येशूको pour नाममा vous qui parlez en d'autres जतिजना langues, अन्य भाषा qui avez बोल्नुभएको छ reçu le don du उनीहरूले Saint-Esprit, पवित्र आत्मा पाए la marche ne s'arrête pas là. हाम्रो दौडाइ त्यही Mais रोकिँदैन pour toi qui ne l'as pas encore fait, जतिजनाले पाउनुभएको tu छैन peux encore le faire. अझै गर्न Tu peux encore सक्नुहुन्छ recevoir le पवित्र आत्मा Saint-Esprit पाउन सक्नुहुन्छ et tu vas le recevoir. र तपाईँले पाउनुहुन्छ Alléluia. आमेन। Et maintenant tu vas marcher à nouveauté अब तपाईँ नयाँमा भएर हिँड्नुपर्छ en lisant sa parole, उहाँको वचन पढेर en la mettant en pratique, यसलाई पालन गरेर dans la fraternité, सेवामा आएर dans la communion avec les frères. एकतामा बसेर Et là tu vas grandir अनि तपाईँ बढ्नुहुन्छ et tu vas progresser धेरै फल पाउनुहुन्छ। comme lui. त्यसरी उहाँले भन्नुभयो Alléluia. आमेन। Si on peut lever les mains vers le हामी Seigneur. सबैजना हात उचालेर प्रार्थना गर्छौँ Alléluia, Jésus. Éternel des armées, Papa, nous te disons merci, Père, d'avoir écouté ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir appelés, Seigneur Jésus, dans ta sainte nation, Seigneur. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Nous ne méritons pas, Seigneur, mais c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Permets-nous maintenant, Père éternel, de marcher à nouveauté de vie, Seigneur. De mettre en pratique ta parole. Père éternel, de persévérer, Papa, dans la crainte de ton nom. De persévérer, éternel Père, dans la lecture de ta parole. Permets-nous chaque jour, éternel Père, de disposer nos cœurs à ta parole. De pratiquer cette parole, Seigneur. D'aimer nos frères et sœurs. D'aimer les membres de nos familles, Seigneur.
Et de ne pas être des hypocrites, Seigneur Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout Merci Seigneur, Papa. D'avoir servi nos incantations, Seigneur. Permets-nous, Père éternel, d'élever nos familles, Seigneur, dans la droiture et dans la justice. Permets-nous de partager ta parole, Papa, sans crainte, mais avec amour et avec zèle. Nous prions, Père éternel, Papa, que nos cœurs soient obéissants à ta parole. Permets-nous, Père éternel, d'être humbles devant ta face et de mettre en pratique ta parole, Seigneur. Permets-nous de nous humilier devant ta face afin que nous puissions avoir la vie. Car tu fais grâce aux hommes, mais tu résistes aux orgueilleux hommes. S'il y a de l'orgueil au-dedans de nous, on lève la pierre de l'orgueil. Mais, Père éternel, Père éternel, un esprit de nous, afin que nous puissions aimer ta parole et aimer tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dise au nom de Jésus. Dieu ne cherche pas des talents, mais il veut juste des vases disponibles. Il peut changer l'eau en vin avec un vase qui lave des pieds. Le plus important, c'est que le vase soit disponible. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche des nations. Nous avons préparé quelque chose en arrière. Ne partez pas, amen. Partagez avec nous. Et nous voulons vous bénir avec la bénédiction de l'Éternel. Vous êtes les bienvenus à partager cela avec nous, amen. Et comme je le dis toujours, n'oublions pas de donner nos dîmes et nos offrandes, parce que c'est pour l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc nous allons préparer en arrière. Soyez libres, il y a déjà des places qui sont préparées derrière. Juste un petit partage. Même un petit ça va faire du bien. Vous êtes pressés. Alléluia. Donc, nous allons servir les visiteurs. Oh, excusez-moi. Alléluia. Pardonnez-moi. La nation a pris ma tête. Nous avons des visiteurs aujourd'hui. Nous avons manqué de les accueillir. Excusez-nous.
Kuma. Il s'appelle aussi Kuma. Bon, il y a beaucoup de Kuma. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le frère Kuma qui est là pour la première fois? Amen. Gloire au nom de Jésus. Nous sommes contents de t'avoir avec nous, frère Kuma. Excuse-nous, c'est le dimanche des nations qui nous a envahis. Amen. Et nous avons le papa. Dan. Amen. Est-ce qu'on peut battre encore les mains? Alléluia, alléluia, gloire au nom de Jésus. Et la maman ici, c'est Santa. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour maman Santa? Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et nous avons Ruth de la Bible. Alléluia. Une femme de foi. Amen. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour maman Ruth? Gloire au nom de Jésus. Et nous avons Huguette qui était là, on l'a déjà présenté. Amen. Et Claire qui est encore avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de faire cette église grande comme elle est parce que vous êtes un peu choisis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mangez quelque chose. C'est pour vous qu'on a préparé des mets de nos pays. Amen. Pour ne plus beaucoup parler, on va aller en arrière. Alléluia. Alléluia. Donc, vous allez prendre quelque chose. Okay. Alléluia. Juste sur ce bouton.